Assalamu alaikum dear students. I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the exercise of chapter number 5, that is variety of life. So let's start. So dear students, first of all, the fill in the blanks. So the blank number 1 is Carolus Linnaeus divided all known forms of life into two kingdoms, डैश एंड डैश. तो दो जो शुरू में किंगडम्स बनाए गए थे डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटी. सो फर्स्ट में एनिमेलिया और सेकंड के अंदर प्लांटी. बैक्टीरिया वर प्लेस्ड इन द किंगडम प्लांटी. क्लियर? बैक्टीरिया को शुरू में किंगडम प्लांटी में रखा गया था बिकॉज दे हैव सेल वॉल्स, एंड प्रोटोजोआ वर प्लेस्ड इन द किंगडम एनिमेलिया बिकॉज दे move from place to place and ingest food. Clear? Now, blank number 2. The most common system of classification used today developed in 1969 by Robert Whittaker of Cornell University uses 5 kingdoms. तो उसमें 5 kingdoms कौन से थे students? You know very well. Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Plantae, and Kingdom Animalia. Blank number 3. Whittaker's 5-kingdom system of classification recognizes 2 basic types of cells, dash and dash. तो दो तरह के cells कौन से हैं dear students? Prokaryotic cells and eukaryotic cells. Blank number 4. In 5-kingdom classification system proposed by Margulis and Schwartz, organelles of symbiotic origin such as dash and dash. तो यहाँ पर आपको याद होगा कि मार्गुलिस और श्वार्ट्स ने बेसिकली मॉडिफाई किया था 5-kingdom classification system जो 1969 में रॉबर्ट व्हिटेकर ने प्रपोज किया था, और उन्होंने मॉडिफिकेशन की थी 1988 में. और इन्होंने बताया था कि जो सिम्बायोटिक ओरिजिन के जो ऑर्गेनल्स 2 ही थे, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. तो ब्लैंक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट वर आल्सो कंसिडर्ड. नाउ ब्लैंक नंबर 5. A bacteriophage reproduces by using the metabolic machinery of dear students. Bacteriophage क्या होते हैं? The viruses which infect or which eat bacteria. तो उनका होस्ट कौन होगा? So that is their bacteria. Clear? The host is bacteria. So a bacteriophage reproduces by using the metabolic machinery of bacteria. Blank number 6. The protein coat that encloses the viral genome is called capsid. It is made up of small units which are called capsomeres. Clear? Blank number 7. Retroviruses are RNA viruses which have specific enzymes. और वो specific enzymes कौन से हैं students? Reverse transcriptases, by which they convert RNA to DNA. Blank number 8. HIV infects. तो dear students, हमने इससे previous lecture में ही इन्फेक्शन साइकिल ऑफ HIV और हेपेटाइटिस को डिस्कस किया था लास्ट 2 लेक्चर्स में. सो HIV इन्फेक्ट्स द T helper lymphocyte. Clear? T helper lymphocyte, and the defects in these cells lead to the failure in immune system. Blank number 9. Hepatitis is caused by, so it is caused by usually by the viruses. Clear? Hepatitis viruses. Blank number 10. Viral hepatitis is of dash types. तो dear students कितनी types थी? Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, hepatitis E, hepatitis F, and hepatitis G. Clear? So viral hepatitis is of 7 types. Hepatitis A and C are caused by RNA viruses, whereas DNA virus is the causative agent of
hepatitis B. Now question number 2. Each question has 5 to 6 objections. Encircle the correct answer. तो ये हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें हम देखेंगे 4-5 इसमें ऑप्शंस है हमारे पास, उसमें हमने जो सही है और मोस्ट अप्रोप्रिएट है उसको हमने एनसर्कल करना है. The first multiple choice question is, the enzymes involved in viral replication are synthesized. तो dear students, जो viral replication होती है उसके एंजाइम कहाँ पर सिंथेसाइज होती हैं? अल्फा ऑप्शन ऑन द वायरल राइबोसोम्स, तो ये तो कोई बात नहीं, वायरस के पास कौन से राइबोसोम होते हैं? They do not have any kind of organelles. Beta option on the interior surface of viral membrane, so dear students, that is not the option. Charlie option is by the host cell. Yes, that is the answer. So the enzymes involved in viral replication are synthesized by the host cell. Now, MCQ number 2, a virion is a alpha option virus, beta option viral protein, Charlie option is viral lysozyme, and delta option is viral gene. तो जी डियर स्टूडेंट्स, आप क्या सोचते हैं? डेफिनेटली आप गेस कर चुके हैं. द वायरियन इज अ वायरस. एक कंप्लीट जो इन्फेक्शियस वायरस होता है उसको हम वायरियन कहते हैं. सो इट इज अ वायरस. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 3. एन आइसोलेटेड वायरस इज नॉट कंसिडर्ड लिविंग. आप अगर किसी वायरस को आइसोलेट कर लें फ्रॉम द लिविंग होस्ट तो उसको जिंदा नहीं समझा जाता. बिकॉज alpha option is separates into two parts, into two inert parts. Beta option cannot metabolize. Charlie option says rapidly loses its genome, chemically inert. Delta option is coated with an airtight shield. तो dear students, इसमें ना तो alpha option ठीक है, ना Charlie, ना delta. So the only we are left with beta option. तो जब उसको आइसोलेट कर लेंगे, अब वो चूंकि वो होस्ट सेल पे टोटली डिपेंडेंट है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकता, ये इट कैन नॉट मेटाबोलाइज. सो बीटा इज द ऑप्शन फॉर MCQ नंबर 3. नाउ MCQ नंबर 4. इन द लिटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, जब भी लिटिक साइकिल होता है जिसमें कि लाइसिस तोड़ फोड़ वगैरह होती है, द होस्ट डीएनए इज, तो उसमें होस्ट डीएनए को क्या रेप्लिकेट करवाया जाता है? अल्फा ऑप्शन. बीटा ऑप्शन टर्न्ड ऑफ बाय अ प्रोटीन कोट. चार्ली ऑप्शन से डाइजेस्टेड इनटू न्यूक्लियोटाइड्स, एंड डेल्टा ऑप्शन इज टर्न्ड ऑन बाय रिमूवल ऑफ अ प्रोटीन कोट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज, एंड द आंसर इज Charlie, that in the lytic cycle of the bacteriophage the host DNA is digested into its nucleotides. तो होस्ट का जो जीनोम होता है उसको इन द लिटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज होस्ट डीएनए इसको उसी के पीसेस में तोड़ दिया जाता है. नाउ MCQ number 5, it says, in the lysogenic cycle the DNA of a bacteriophage, alpha option joins the bacterial chromosome, beta option says attaches to the inner surface of the host membrane, Charlie option is immediately degraded when it enters the host cell, and delta option says goes directly to the host ribosome for translation. तो dear students, जैसे ही लाइजोजेनिक साइकिल में एंटर होता है DNA ऑफ अ बैक्टीरियोफेज, तो वो फौरी तौर पर जाकर उस बैक्टीरियल क्रोमोसोम DNA के साथ कंबाइन कर जाता है. So it joins the bacterial chromosome to become prophage. Clear? So the correct answer for this MCQ number 5 is alpha option. MCQ number 6. The temperate phage may exist as, जो temperate phase मतलब कि lysogenic में जो होता है bacteriophage, may exist as, alpha option is prophage, beta option is capsid, Charlie option is virioid, and delta option is retrovirus. तो dear students, आपको पता है, आप जान चुके हैं कि temperate phage may exist as prophage.
So the correct answer for MCQ number 6 is alpha. Now, MCQ number 7, phylogeny describes a species. तो phylogeny किसी भी species की किस चीज को describe करती है? Alpha option, morphological similarities with other species. Beta option, evolutionary history. Charlie option, reproductive compatibilities with other species. And delta option is geographical distribution. So dear students, the correct answer for this MCQ number 7 is that phylogeny describes a species' evolutionary history. Clear? So beta option is correct. Now, MCQ number 8, in the binomial system of taxonomy developed during the 18th century by Carolus Linnaeus, the first word of an organism's name, for example, Homo sapiens, is its alpha option species, beta option genus, Charlie option race, and delta option family. तो dear students, आपको पता है binomial nomenclature में दो ही तो word इस्तेमाल होते हैं. The first is genus and the second is species. तो यहाँ पर first word का पूछा गया है. So the correct answer is beta option, that is genus. Now, the MCQ number 9, it says, in the 5 kingdom system of classification developed by Robert Whittaker, members of the kingdom Plantae are autotrophic, eukaryotic, and alpha option multicellular, beta option motile, Charlie option either unicellular or multicellular, and delta option is have sexual reproduction. तो डियर स्टूडेंट्स, जो क्लासिफिकेशन की गई थी उसके हिसाब से देखा जाए तो ना तो प्लांट्स मोटाइल हैं, मतलब बीटा ऑप्शन गया, आइदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, तो यूनिसेलुलर का तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इन किंगडम प्लांटी, सो चार्ली ऑप्शन भी गया. डेल्टा ऑप्शन हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन के एतबार से भी यहाँ पर कोई बात नहीं हुई थी अकॉर्डिंग टू देम. और जो वी द नियर अबाउट एंड द नियर मोस्ट आंसर correct to this question is alpha option, that is multicellular. Clear? So the plants are autotrophic, eukaryotic, and multicellular. MCQ number 10, it says 5 kingdom systems of classification proposed by Margulis and Schwartz is not based on. तो जो modify किया था 5 kingdom classification system of Robert Whittaker को by the Schwartz and Margulis in 1988, तो उसमें किस चीज़ को कंसिडर नहीं किया गया था? नीचे जो 4 चीज़ें गिवन हैं, वो अल्फा ऑप्शन जेनेटिक्स, बीटा ऑप्शन इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, चार्ली ऑप्शन इज न्यूक्लिक एसिड, एंड डेल्टा ऑप्शन इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो द करेक्ट आंसर इज चार्ली, दैट इज न्यूक्लिक एसिड्स. MCQ number 11, the common name of Allium cepa, the common name of Allium cepa is, तो एलियम सीपा का कॉमन नेम क्या है? अल्फा ऑप्शन प्याज, बीटा ऑप्शन बाथू, चार्ली ऑप्शन अमलतास, एंड डेल्टा ऑप्शन इज चना. तो डियर स्टूडेंट्स क्या है? यू नो, यस, वेरी वेल, दैट्स करेक्ट, अल्फा ऑप्शन, दैट इज प्याज. सो एलियम सीपा इज इसका जो कॉमन नेम है दैट इज प्याज. नाउ देयर इज अनदर MCQ number 12, arrange the following in the order of increasing group size beginning with the smallest. तो एक वो टेक्सोनॉमिक हायरार्की दी गई है, उसको अरेंज करना है स्मॉलेस्ट से ऊपर की तरफ, हाईएस्ट की तरफ, ठीक है, लार्जेस्ट की तरफ. तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आपको पता है स्पीशीज, देन जीनस, देन देयर इज फैमिली, देन देयर इज ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम or division, and at the top there is kingdom. MCQ number 13, it says pigs are reservoir to. तो जो सुअर हैं, ये हेपेटाइटिस में हमने पढ़ा था, ये किस वायरस, हेपेटाइटिस वायरस के रेजरवायर हैं. सो दैट अल्फा ऑप्शन इज हेपेटाइटिस A, बीटा ऑप्शन हेपेटाइटिस B, चार्ली ऑप्शन हेपेटाइटिस C, डेल्टा ऑप्शन हेपेटाइटिस D, and the epsilon option is hepatitis E. So the correct answer is epsilon, मतलब कि E, hepatitis E is the correct answer for this question. So जो pigs होते हैं they are reservoirs, मतलब कि इनके अंदर मौजूद होता है
the virus of hepatitis E. And the last one, MCQ number 14. Which one of the following is false about AIDS? Alpha option HIV, beta option is acquired immunodeficiency syndrome, Charlie option is T lymphocytes, and delta option is not correct. So dear students, hopefully आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.